वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल पास्ट पेपर। अब आज की वीडियो में हम क्लास HSSC 2 यानी सेकेंड ईयर का फिज़िक्स का पास्ट पेपर डिस्कस करे हैं, जिसका सेक्शन ये आप स्क्रीन पे नज़र आ रहा है। इसके सेक्शन ए के मार्क आपके पास 17 है, 17 ही MCQs हैं और इसका टोटल टाइम आपके पास 25 मिनट है। और हर MCQs एक नंबर का है और उसके साथ 4 ऑप्शन है। आप लोगों ने कोई भी करेक्ट ऑप्शन को सिलेक्ट करके उसके बबल को फिल कर देना है। आगे सेक्शन बी के इसमें आपके पास आगे इसका सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, जिसमें हम आपको सेक्शन बी मार्क 42 नंबर के क्वेश्चन हैं। क्वेश्चन नंबर 2, आंसर द फॉलोइंग पार्ट ब्रीफली। इन क्वेश्चन के आंसर्स आप लोगों ने ब्रीफली देने यानी शॉर्ट आंसर देने हैं। आगे क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 30 सेंटीमीटर और 3 milli EC point charge or state Ohm's law, derive its mathematical form and give its limitation, or state Faraday's law of electromagnetism induction and give one practical application, or distinguish between conductor and insulator of a basic of energy and theory energy brand theory. Number 3, state Kirchhoff current law KCL, apply it a simple junction, give and calculate. L4, or in the rubric formula, determine the value of P and N from Lyman and Paschen series of hydrogen atom. Number 4, describe briefly the motion of a charged particle in an uniform magnetic field, or a 60-volt resistor is connected across AC supply of 220 volt. Calculate the current drawn from the supply and the power consumed by the heating element. Number 5, briefly explain the role of moderator and control rods in nuclear reactor, or briefly explain the working of potentiometer with current diagram. Number 6, apply Gauss law to explain electric field intensity inside a hollow conductor, or briefly explain the phenomenon of photoelectric effect with Elstrin equation. Number 7, reduce the expression from maximum output power diverted to load resistance, or how are eddy current produced, explain briefly. Number 8, difference between self-induction and mutual induction, draw also their circuit diagram, or difference between nuclear fission and nuclear fusion reaction with example. Number 9, distinguish between soft and hard ferromagnet material by drawing their curves, or what is meant by condensation and conductivity in a material, give their SI unit. Number 10, what is meant by rectification, draw circuit diagram of a half wave reflector using diode, or briefly explain the construction and working of a transformer. Number 9, compare inertial and non-inertial frames of reference, give an example, or what is meant by electric potential at a point, what its unit. Number 9, state Ampere laws, describe the strength of magnetic field. Number 8, inside a circuit carrying solenoid, and B, outside a current carrying solenoid, or what is meant by impedance, draw phasor diagram of RL series circuit. Number 13, draw factor affecting the resistance of a conductor, any 3 point, or discuss do Balgio hypothesis of matter waves. Number 14, briefly explain antithesis mass energy relation and its nuclear application, or briefly describe the following: tensile stress and Young modulus. सेक्शन सी मार्क 26, नोट अटेम्प्ट द फॉलोइंग क्वेश्चन। इसमें आपके पास हर क्वेश्चन के मार्क, ये जो फर्स्ट 3 क्वेश्चन हैं इनमें जो पहले 2 क्वेश्चन इनके 7 मार्क हैं, जो नीचे वाले 2 क्वेश्चन इनके 6 मार्क हैं। आगे क्वेश्चन नंबर 3, ड्राइव द एक्सप्रेशन फ्रॉम capacitance of a parallel plate capacitor with and without dielectric, or what is meant by motional ML. Compute the potential difference across the end of rod moving through a magnetic field in a simply way.
Question number 4. Explain with derivation the behavior of a pure induction AC current and draw its Passer diagram. Or using Bohr's postulate, drive the expression of energy level of hydrogen atom. Question number 5. Describe a pH junction and discuss its forward and reverse biasing with diagram, or explain the impulsion of mass increase, time dilation, and length construction for space travel. Number 6. Explain magnetic field of a solenoid. Drive expression for field inside a long solenoid using Ampere law. Explain the construction and working of a Geiger-Müller conductor. अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो मेरे इस चैनल को पास पेपर आपको लाइक सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, क्योंकि ताकि मेरी नई से नई आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। थैंक यू सो मच।